अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिवाइस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे उस डिवाइस का नाम है OnePlus 10T। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल का नाम है गैजेट टेक रिव्यूज़, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके स्क्रीन साइज़ से। इसका जो स्क्रीन साइज़ है काफ़ी अच्छा और बिग दिया गया है। 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ है इसका, और जो पिक्सल हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। 1080 मल्टीप्लाई बाई 2412 पिक्सल दिए गए हैं इसमें, और स्क्रीन देखने में भी काफ़ी बड़ी लग रही है, और इसके जो पिक्सल हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। और आपको इस स्क्रीन साइज़ की जो PPI डेंसिटी है वो भी अच्छी दी गई है। इसमें आपको अच्छे पिक्सल मिलेंगे, कलर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। और जो अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके भी जो हैं पिक्सल्स वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। आपको इस कैमरे से एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा पिक्चर बनाने में और टिकटॉक वीडियोस बनाने में। कोई भी वीडियो बनाने में आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, नाइट में भी डे में भी। नाइट में थोड़ा सा जो है वो क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन डे लाइट में तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, डिटेल में आपको मिलेगी पिक्चर्स। और अगर हम इसकी रैम के बारे में बात करें, रैम दी गई है 8/16 GB रैम दी गई है। 8 और 16 GB रैम में आपको एक अच्छी स्पीड देखने में मिलेगी। अगर 8 GB रैम वाला वेरिएंट आप लेते हैं तो उसमें भी अच्छी स्पीड मिलेगी आपको, और 16 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको उसमें उससे भी ज़्यादा अच्छी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। और इसमें जो चिपसेट लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 लगा हुआ है, लेटेस्ट चिपसेट लगा हुआ है, जो आपको इस डिवाइस में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और जो उन्होंने इसमें सेल में बैटरी लगाई गई है 4800 mAh की बैटरी है। बैटरी कुछ जो वो भी बहुत अच्छी लगाई गई है, लेकिन कुछ मुझे कम लग रही है। 5000 mAh होनी चाहिए थी, लेकिन ये 4800 mAh की बैटरी, लेकिन फिर भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल सकता है। और देखें तो इसका जो स्टोरेज है ये दो स्टोरेज में अवेलेबल है, 128 GB 256 GB स्टोरेज में। इसमें कार्ड स्लॉट जो है मौजूद नहीं होती। Android 12 आता है इसमें, और ऑक्सीजन OS 13 मौजूद होता है। थिकनेस जो है इसकी 8.8 mm है, और जो वेट है 204G है। और इसकी मोटाई जो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। स्लिम फ़ोन है और स्टाइलिश फ़ोन है, और प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन बनाया गया है। और बैक से आप अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखता है फ़ोन, और जो इसकी कैमरे की प्लेसिंग है वो भी बड़ी अच्छे स्टाइल में की गई है। OnePlus का फ़ोन अपने स्टाइल के लिहाज से मशहूर है, और बहुत ही अच्छे कलर इस फ़ोन में अवेलेबल हैं। OnePlus 10T, release 2022, the 6th of August, 204 gram, 8.8 mm thickness, Android 12, Oxygenos 13, 128 GB, 256 GB storage, no card slot, 6.7, 1080 times 2412 pixels, 50 MP, 2160p, 16 GB RAM, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4800 mAh, network technology GSM, HSPA, LTE, 5G LEUNCH, announced 2022, the 3rd of August, status available. Release 2022, the 6th of August, BODY dimensions 163x75 4x8 8mm, 6.42 x 297x035 in, weight 204 grams, 7.20 ounces. Build glass front, Gorilla Glass 5, plastic frame, glass back, Gorilla Glass 5, SIM dual SIM, nano SIM, dual standby display type, fluid AMOLED, 1B colors, 120 Hz, HDR10 plus, size 6.7 inches, 108.0 square centimeter, approximately 87.9% screen to body ratio, resolution 1080 times 2412 pixels, 29 ratio, approximately 394 ppi density. Protection Corning Gorilla Glass 5 platform, OS Android 12, Oxygenos 13 chipset, Qualcomm SM8475, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4nm, CPU Octa Core, 1x 3.19 GHz Cortex-X2 and 3x 2.75 GHz Cortex-A710 and 4x 1.80 GHz Cortex-A510, GPU Adreno 730, memory card slot no internal, 128 GB, 8 GB RAM, 256 GB, 12 GB RAM,
256GB 16GB RAM UFS 3.1 main camera 50MP f1.8 24mm wide 1.56 1.0 m PDAF OIS 8MP f2.2 120 ultra wide 1.4 1.12 m2 MP f2.4 macro features dual LED flash HDR panorama video 4K 830 60 fps 1080p 830 60 240 fps Euro Eyes selfie camera single 16MP f2.4 24mm wide 1.3 1.0 m features HDR video 1080p 830 fps sound loudspeaker yes with stereo speakers 3.5mm jack no 24-bit 192 kHz audio comms WLAN Wi-Fi 802.11 AB G N AC 6 dual band Wi-Fi direct Bluetooth 5.2 a 2DP LE apps HUD positioning GPS L1 plus L5 GLONASS L1 BDS B1I plus B1C plus B2A Galileo E1 plus E5A QZSS L1 plus L5 NFC yes radio no USB Type-C 20 FE8 URES sensors fingerprint under display optical accelerometer gyro proximity compass color spectrum battery type LiPo 4800 mAh non-removable charging 150W wired 125W for 110V sockets MISC colors Moonstone black Jade green models CPH2415 CPH2413 CPH2417 price $429 €589 and 89 cents 604 British pound and 99 penny 39,999 rupees 1,100 Nicaraguan Cerdoba and 25 centavo TSTS Performance Antutu Dirchenwect V9 Geekbench 3907 V51 FS Bench 103 FPS ES 3.1 on screen display contrast ratio infinite nominal camera photo video अब हम इस फ़ोन के 3D इमेज को डिटेल में देखते हैं कैसी साइड्स दी गई हैं इसमें बैक साइड कैसी दी गई है और कैसे देखने के लिहाज से कैसा फ़ोन लग रहा है कौन कौन से सेंसर दिए गए हैं इसमें और कैसी साइडें दी हैं शार्प साइडें दी हैं किस कलर का टच दिया गया साइडों पे देखें आपको साइडों पे सिल्वर कलर का टच दिया गया और बैक पे भी बैकिंग भी बहुत अच्छी बनाई है ट्रिपल कैमरा सेटअप बनाया गया इसमें ये नीचे जो है बैक साइड से देखें तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लग रहा है यूनिक कलर्स में ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है और अब 3D इमेज जो है अब इस 3D इमेज को देखते हैं देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ़ोन में 3.5 जैक मौजूद नहीं है और आपको इस फ़ोन के साथ एक अच्छा और बड़ा चार्जर देखने को मिलता है जो आपके फ़ोन को जल्द चार्ज कर देगा और इसमें आपको 3.0 केबल मिलती है जो आपके फ़ोन के साथ
चार्जिंग के लिए दी गई है और आप इस फ़ोन से एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन दी गई है इसमें। इस प्राइस रेंज में आपके लिए एक बेहतरीन फ़ोन है ये। कॉस्टली तो लगेगा लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है। आपको 1 लाख समथिंग में ये फ़ोन पड़ेगा पाकिस्तान में और बहुत बेहतरीन फ़ोन है। इस स्पेसिफिकेशन में आपको ये कंपनी ऑफ़र कर रही है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और मटेरियल के लिहाज से काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इस फ़ोन की।